HornbillTV la Nagamese Express. Nagaland la Power and Parliamentary Affairs Minister KG Kenyebra HornbillTV logo exclusively kotha kora homoy Nagaland de power situation upor kuise ki Nagaland la power demand do 200 megawatts ase hoilibi Nagaland bra khali 20 to 25 megawatts hi produce kore. Population of Nagaland do uthi ja ase aru demand aru itu nishna load bi borai jai ase aru unfortunately ja sal khan de hydro resources khan tap kurubole na pare kuise. Our public logo pra revenue collection bi komti thaka kuise kundu bra department de bishi digdari thaka janaise will be Asian Development Bank pra agree kuise lower TZ hydro kundu 42 megawatt ase aro zinki hydro kundu 24 megawatt thaka do finance kurbo kundu department laga top 2 priority list te ase kuise aro minister bra bishi juldi stable power supply thaki bole assure kurise. Since you're also the powers ministers of power, so Nagaland has this. We've been noticing that we buy a lot of energy from outside the state, and we produce very less energy within the state. So, is the power department planning of putting up projects so as to be self-reliant, and also, and the common problem right now that Dimapur actually is facing is the erratic power supply. So what could some of the reasons be, and what could some of the mitigating steps be so as to provide a decent power supplies? Yeah, this has to be properly understood by the public. The power department, when I took over in March this year, after having interacted with my department, I said this is a stock exchange, Mumbai Stock Exchange. They only buy and sell, dalals. So we don't produce enough. We produce about less than 20, 25 megawatts at the most, the installed capacity. Then our peak requirement is nearly 200 megawatts. And we are able to put in about 25 megawatts there. So there's a short supply of about 140-50 megawatts. So this is where we buy from the power grid. But power grid also has a limit. They don't give everything to one state, but they have to share among all the states. So the demand, the consumers have increased, and loads have increased, whereas we have not been able to produce more. Unfortunately, we did not tap our hydro resources in the past. So we continue to buy. When we buy and sell it to the people, they have to be prompt in the payment of the bills. Because with that revenue, whatever we get back as the rent from the people, the department again pays it to the power grid and supply. So when the revenue does not come properly, the government faces a lot of difficulties, especially the department. So this is one department which is working overtime. Our engineers from the top to the bottom, the field staffs, they are putting in everything they have. Unlike the 10 to 3 p.m. office in other departments, this is a 24/7 thing. You've got to keep supplying. It cannot stop. So they've been doing that. The poor guys have been working it out. But our equipments are very, very old, 35, 40 years back. And every nook and corner is asking for new transformer, new lines. It's quite natural. After all, there's an increase of population. So we have moved to the center, and now they are giving us hopefully enough for the time being, which we will start supplying next year maybe, the equipment, like the poles, the wires, the transformers, and upgradation of certain stations in some parts, okay? But here too, I would like the people to understand that producing is not an easy job. Wind, solar, biomass is different. But hydro takes a lot of time. And unfortunately, we did not do it some decades back. This time we have moved, and the Asian Development Bank has already agreed to finance a few. The first is the lower TZ of 42 megawatts. Second is the Zinki, like 24 megawatts. These two projects are topping the list.
With this itself, we'll get about 70 megawatts. That should be, that should somehow cover our requirements for the present. And we will keep trying everywhere. Solar, I'm targeting to make it a stopgap arrangement. Very soon we'll have stable power supply. And then we will save the revenue. Okay? Nagaland the charter nutun districts create kurise Zemenu Newland Chumugidma aro Shamator 2022 salde aro itude Hornbill TV ba Nagaland la unemployed youths nimide government post creation opor hudia homoy aro NPSC bra civil service aspirants khan nimide itu sal aro bi post khulibona nai hudia homoy Nagaland la Power and Parliamentary Affairs Minister aro government la spokesperson KG Kenya bra kuise ki itu exactly government la plan thaka kuise nutun districts create kurade कित्या नतुन डिस्ट्रिक्ट्स खुलिबो नेक्स्ट तो पोस्ट क्रिएट कुरा लगा आहे कोइकिना स्पोक्सपर्सन बा कइसे ओलवी पोस्ट क्रिएट कुरुबुले लगा दो फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऊपर असे कइसे कुंदुब्रा गवर्नमेंट के होल्ड बैक करे ओलवी ताइब्रा अश्योर कुरिसे कि टाइम दे गवर्नमेंट ब्रा आरबी पोस्ट बिशी क्रिएट कुरबो कोइना regarding the creation of new districts. Last year we saw the creation of 4 new districts: Newland, Seminyu, Shamator, Noklak. Now Chumugidima, sorry. So, sir, with the increase in districts, so there are thousands and thousands of educated unemployed youths who are all aspiring to become civil servants. Now, with the increase of districts, more posts and manpower will be required. So, sir, can the civil service aspirants expect that this year's NPSC advertisement will give out more posts to the aspirants, and so that at least this will be another opportunity for the educated unemployed youths in Nagaland? To accommodate the educated youths and provide them more jobs, the government's strategy was to lay the foundation. So when more districts are being created, what follows next will be the creation of posts in all these districts. So that is exactly why this policy has been outlined, and we have been successful in creation of these districts. And more may follow, But the period for the creation of posts depends a lot on our financial position. You know better. We are a poor state, so that is what is holding us back. But each year, the government is trying to create more, when any time the financial position permits us. So with time, we'll be creating more jobs for us. Temogan nikta khata break loina wapasayo sai thakbe Hornbill TV. Reliable enterprise, civil construction. Deal weekly lottery kini bi 6 taka te aro chitibo pare 1 crore khali 6 taka. Dear hafta lottery botni kori dibo apni la jiban. Welcome back. Bharatiya Janata Party la National President JP Nadda और Union Minister Anurag Thakur आज शिमला पुंची से हिमाचल प्रदेश ते पानी बिशी पूरा और फ्लड्स खान ब्रा स्टेट पूरा दे डिस्ट्रक्शन आने दो साबुले मीडिया लोदे कोथा कुरिया हुमोय JP Nadda ब्रा कुइसे ताई आजी चांस पाइसे हिमाचल दे आई बोले और फ्लड ब्रा अफेक्टेड हुआ खान लोगों कोथा कुरु बोले और ता खान लगा दुख हुनी बोले ताई बात जनाई से ताई बिशी मुंदु कसे मानु खान लगा जान जा लगा ऊपर इतु डिस्ट्रक्शन ब्रा तारो कुइसे की सेंटर ब्रा सब मतो दिवो स्टेट सरकार के हिमाचल प्रदेश के आरो नॉर्मल दे रिटर्न कुरु बोले
यहाँ आने का मौका मिला है और क्षतिग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनको देखने का भी मौका मिला। मन बड़ा द्रवित हुआ है और बहुत ही दुखी हुआ है यह देखकर कि यह त्रासदी किस तरीके से मानवता के लिए और हमारे जनजीवन को इसने अस्त व्यस्त किया है। प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हम सब की जो क्षति हुई है उसके प्रति परिवारजन जिनकी क्षति हुई है हमारी सबकी सहानुभूति है। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है कि उनको ठीक ढंग से जो विस्थापित हुए हैं उनको आगे चल करके सेटल कराया जाए। और इसी कड़ी में आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें योगदान रहेगा। आज मुझे शिमला में मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा। आप सबकी बात भी मैं वहां रखूंगा। जहां तक केंद्र का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सभी इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उनकी तरफ से मैं आया हुआ हूं। और केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और नहीं रहेगी। जब जब कहा गया हमने तब तब आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है। और आज जब मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो उनसे सारी बात करके फिर आगे और भी हम करेंगे। Communist Party of India la General Secretary Sitaram Yechuri kun charta member delegation team Manipur lui jaise Manipur Governor Anusuya Uike ke lok paise state laga alag alag jaga ja pichide और संडे दे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे ताइबरा कुसे कि बीजेपी ला डबल इंजन गवर्नमेंट खान आरो डबल काम करिगिना स्टेट ते शांति आने बोले लगा काम कुरु बोले लागे कुंदु 3 महीना ब्राबी बिशी जायस ताइ जनाइसे दुईता कम्युनिटी ला मजोते किनगा कुरिगिना भी डायलॉग और डिस्कशन कुरु बोले मातिबो लागे कुंदु दो सेंटर और स्टेट ला प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी अस स्टेट ते डबल इंजन गवर्नमेंट नसे कुले डबल एनर्जी धाली बोले लागे और दुईता कम्युनिटी खान गे भी टेबल दे आनिगिना सॉल्यूशन काने बिसारु बोले लागे कुइसे We met that she should interfere, and the state, in the sense the governor, should interfere to ensure these things are there. But the basic issue here is how is this ethnic conflict going to be resolved? We believe it cannot be resolved through violent means. There has to be some sort of a dialogue and discussion. And that is where the governments, both at the state and the center, have their primary responsibility. If it's a double engine government, then please take double engine or double energy efforts to try and bring together everybody onto a talking table. And let us discuss what are the issues that need to be resolved. We have done this in the past. That's the only way in which all problems that India had faced in these 75 years have been resolved. And they ought to be resolved that way. Why they are not taking that initiative 3.5 months past, only they can answer. And that is why, that is what gives the rising of doubts of whether there is any complicity involved. All the 10 Kuki MLAs saying that they will not attend the session or they cannot attend the session. If that is the case, then I don't know what the government is planning.
Whether they'll go ahead with it or what they'll do, it's up to them to answer. I mean, why can't create? I mean, conditions could not be created for their attending. They are elected members after all, and 7 out of these 10 support this government. 2 ministers. Without the support of these 7 kooky MLAs, this government wouldn't have come into existence. The chief minister would not have been the chief minister. But why conditions could not be created? I mean, that's for them to answer. But it's unfortunate. You see, the central forces, or any time, it's not, blaming them is not the answer or correct. The central forces act under a command, under a political direction. What is the political direction given to the central forces? That is, if that is absent, how do you blame the forces? We have seen this happen a number of times. I've seen this happen as a student and working with the student movement in the 1984 riots in Delhi. We could see the army tanks go on the streets where the riots are happening and the Sikh community was being assaulted and attacked. You go and stop them and ask them, why are you not interfering? He says, give us the order. That has, I mean, you understand how this the system works. এতিয়া মই আৰু একটা ব্ৰেক লৈ নাও পাছায়ো চাই থাকিবি হৰ্নবিল টিভি Robotic surgery available only in Swagat Super Specialty Hospital, Guwahati, Assam, in entire Northeast. At office, I may be the boss. But being a woman, I have to make my home the best place to live in. Mama! Hey! Every day, my priority is to give the best to my family. Hey, welcome home. Wow, that's great. Everyday spices makes my task easier. Everyday spices never let you down. Welcome back. Union Home Minister Amit Shah আজি Madhya Pradesh government laga report card release kuri dise Bhopal de. Ito homoy taibra Manu Khan ke address kuria time de kuise 53 years kane Madhya Pradesh to Congress la sarkar thaka karne ekta bimar state hui jaise kuise aru 2003 de BJP a pichite takan kaam kurigina bimar state laga naam hatai dise kuise. इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 56 के पहले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, वहां पर भी कांग्रेस का शासन था और 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। 1980 के दशक में एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक श्री आशीष बोस ने राजीव गांधी जी को एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बीमारू शब्द का प्रयोग किया था और बीमारू शब्द का प्रयोग किया था
उस उद्देश्य से किया था कि पूरे देश की ग्रोथ रेट को, विकास दर को अगर कोई 4 राज्य नीचे ला रहे हैं तो ये बीमारू राज्य ला रहे हैं। और बीमारू राज्य का शब्द प्रयोग 4 राज्यों के पहले अक्षर से लिया गया था। बिहार, संयुक्त मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य देश की विकास दर की नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा आशीष बोस जी ने एक पेपर के अंदर इसको रखा था। और तब यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय सभी विकास दर के मानांक तय करने वाली सभी एजेंसियों में ये 4 राज्यों को राइट ऑफ स्टेट कर उल्लेख किया जाता है कि इसमें कुछ सुधर ही नहीं सकता है। ये 4 राज्य राइट ऑफ स्टेट माने जाते हैं। और वो सभी सर्वेक्षणों ने भी ये बीमारू राज्य को भारत के ग्रोथ की बाधा के रूप में वर्णित किया गया। 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। तो ये था से इतना बुलेटिन का और अलग अलग खबर का साइड हॉर्नबिल टीवी। गुड बाय। दुनियाते थाक्या साफा पानी कुंतु खाली 0.3% असे इदु तो खाली खाउले गर्ने एकला नहोय इदु साफा पानी तु आमी खान एग्रीकल्चर ते खाव सामान खान ओलाउले गर्ने भी चलाय आरो इदु पानी खान वाइल्ड लाइफ सपोर्ट करे एकता हेल्दी फंक्शनिंग इकोसिस्टम दिवो गर्ने इदु गर्ने पानी खान तु पोल्यूशन फ्री राखियो लागे आरो आमी खान लगा वेस्ट खान मिसामिशी रिवर बैंक्स खानते नफेलाउले लागे कुंतु प्रा पानी पोल्यूट करे दे। साल 2019 ते सरकार प्रा जल शक्ति अभियान लॉन्च कुरिशे नेशन वाइड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन ते कुंतुप्रा सिटीजन्स खान के पानी कंजर्व करोले इनकरेज करे ग्रास रूट लेवल ते प्रा इदो साल जल शक्ति अभियान प्रा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स खान क्लाइमेट कंडीशंस हिसाब ते कुरोले इनकरेज कुरिशे। साल 2021 ते इदो स्कीम खान एकता प्रिपरेटरी स्टेप लॉन्च कुरिशे जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन को इकिना कुंतु एकता मैसिव अवेयरनेस ड्राइव से नेहरू युवा केंद्र संगठन लोगो कोलैबोरेट करिकिना इदो कैंपेन ते देश